Hello guys, good morning. This is Mike Raj here, and today I am going to get discuss about the gravitation. Okay, so first of all, we will discuss about the Kepler's law related to planetary motions. First law of Kepler, that is known as orbital law. So orbital law states that every planet revolves around the sun in the elliptical shape, okay, or elliptical path. This path is elliptical path. So we can say that every planet revolves around the sun in the elliptical path whose center is sun. This is the first law of Kepler, which is known as orbital law. Means एवरी प्लैनेट जो है, कोई भी प्लैनेट है सन के अराउंड में, सन के आसपास एलिप्टिकल पाथ यानी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है इन द एलिप्टिकल पाथ. ओके, सो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in the elliptical path whose center is sun. This is the first law of Kepler, which is known as orbital law. Okay, now second law, which is known as area law. Area law states that every planet subtended equal area in the equal interval of time. यानी कोई भी प्लैनेट है, अगर टाइम इंटरवल सेम है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो उनके थ्रू जो एरिया एब्जॉर्ब किया जाएगा, सबटेंड किया जाएगा, वो भी इक्वल ही होगा. कैसे? सो लुक हियर, दिस इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ whose center is sun. So let me consider a planet moves from A to B. So here time is TAB and it from C to D, and this time is TCD. So this bounded area is, and this is okay. So if TAB equals to TCD means यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में जो टाइम है वो और यहाँ दो पॉइंट्स के बीच में टाइम है वो इक्वल है, देन एरिया ऑफ SAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ SCD. ओके, सो we can say that every planet subtended equal area in equal interval of time. Means same time में same area subtend करता है. This is the second law and this is also known as area law. Okay, and now third law, that is known as time period law. Third law, and it is known as time period law. So according to this is planetary motion whose center is sun, okay, and this is planet. So in the elliptical path we can't be say this is as a radius, but it is the mean length. R equals to mean length between S and P. मीन्स सन एंड प्लैनेट के बीच की मीन लेंथ है, एवरेज लेंथ है. ओके, बिकॉज दिस इज अ इलेक्ट्रिकल पाथ एंड in the elliptical path this is a major axis and this is a minor axis, so we can't be said that both are equal. Here this is 2a and this is 2b, so we can't be say both are as like a radius. So here it can't be equal, so we can't be say this is like a radius. ये यहाँ पर हम इनको रेडियस नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये दोनों की लेंथ अलग अलग है, देख रहे हैं, और वैसे भी एलिप्स में ये चेंज होती है. ये ऐसा नहीं है ऐसा ये सर्कल के लिए सेंटर से सभी लेंथ इक्वल होंगी, ये रेडियस. अगर ऐसा होता तो हम रेडियस कह सकते थे, बट हमने सबसे पहले इन्फॉर्म किया था कि कैसा पाथ होता है,
इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल पाथ होता है वो ऐसा होता है, और उसकी सेंटर से सभी लेंथ इक्वल नहीं होती। ऐसे जो लेंथ होती है मेजर एक्सिस होती है, और ये अपवर्ड जो है माइनर एक्सिस है। ये a इज ग्रेटर देन b, सो वी कांट बी से दैट बोथ आर इक्वल। सो इन दिस वे टाइम टेकन इन वन कंप्लीट राउंड, ये जो टाइम टेकन है किसी भी प्लैनेट के थ्रू, इसका स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन by the planet in one complete round directly proportional to the cube of mean distance between sun and planet. Is it clear? So for the one complete round, okay, square of the time taken in one complete round is directly proportional to the cube of mean distance between sun and planet. So t square proportional r cube, or we can say that t square is equals to k r cube, or t square by r cube is equals to constant. Okay, this is third law, and we can say that this is the time period law. Okay, so in this way these three laws of Kepler's related to the planetary motion. And now we are going to discuss about the Newton's gravitation law, universal gravitational law, Newton. So Newton's gravitational law. So let two masses m1 and m2, which are placed at a distance small r from each other in the air, show force F, which is attractive. It is only attractive in nature, attractive force, not be repulsive. That is the electrical force which is in both nature, attractive or repulsive. But this is a gravitational force, and every body attract under the gravity. Okay, हर एक body को अर्थ अपनी तरफ attract करती, that is the gravitational. So gravitational force is only attractive force. So when write down, when two bodies with the masses m1 and m2 which are placed at some distance r, then attractive force or gravitational force or Newton's gravitational force is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between both masses. So by equation first and second, so F proportional m1 m2 by r square. Okay, and whenever we remove this proportional sign, so a new constant will come g, m1 m2 by r square, where g equals to universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 raised power minus 11, and its unit is Newton meter square per kg square. Okay, by this help we will solve its dimension. So this is the Newton's gravitational law. Okay, when two bodies m1 and m2 placed at some distance r in the air, then attractive force or gravitational force will be directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between both masses. So in this way we can say that gravitational force also follows the reciprocal square law. Okay, according to this. So by equation first and second, F proportional m1 m2 by r square, and when we will remove this constant, then there will come a new constant just like g, and g is known as universal gravitational constant, and its value is 6.67 into 10 raised power minus 11 Newton meter square per kg square. So according to this, this is its formula, and g is equal to f into r square upon m1 into m2. According to this, we have to put this unit is force Newton,
r square meter square upon kg into kg square. So this is the unit of universal gravitational constant, and now the dimension of this is equals to Newton, mLt minus 2 meter square L square upon kg square m square. So in this way m minus 1 L cube T minus 2. This is the dimension of universal gravitational constant. Okay, let me discuss for an example related to this. Two bodies of masses 50 kg and 800 grams placed at 4 centimeter apart in air. Find gravitational force. Okay, so here two masses, this is m1 equals to 50 kg and m2 is equals to 800 gram, means 800 upon 1000 means 0.8 kg, and r is equals to 4 centimeter, that means 4 into 10 power minus 2 मीटर. ध्यान रखिएगा यहाँ पर मास जो हो केजी में ही होना चाहिए, तो जिसमें भी उनको कन्वर्ट कर लेंगे. लेंथ मीटर में ही होनी चाहिए, ये रिलेशन ध्यान रखिएगा. 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 kg. 1 मीटर 10 पावर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 power minus 3 meter. We will use all these parameters to solving these problems. So r equals to this. So force is equals to 6.67 into 10 raised power minus 11 m1 m2 by r square. So it is equals to 6.67 10 raised power minus 11 m1 m2 by r square. 4 का स्क्वायर 16 and minus 2 का minus 4. Okay, so it will be equals to 6.67 into, ये आ जाएगा 40 upon 16 into 10 raised power minus 11 minus 4 तो minus 7. उसको डिवाइड कर दीजिए, इतने न्यूटन अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा. ओके, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका क्राइटेरिया. एंड हियर let me consider two metallic sphere. Two metallic spheres of radii 3r and 5r with same material placed at 10r length. So in which way force depend upon r. अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हमने डिस्कस किया कि f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है. ये डिस्टेंस थी उन दोनों बॉडी की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर 10r पर देखें तो वो भी r स्क्वायर ही होगा. बट यहाँ पर एक खास बात ये है, देखिएगा टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ 10 रेडियस. ये जो मेटेलिक स्फीयर है सेम मटेरियल की हैं और इनकी जो है मासेस गिवन नहीं है. ये मास जो है इनके किसके फॉर्म में है, रेडियस के फॉर्म में है. तो अब जो r के फॉर्म में जो वैल्यू है इनके मासेस की, उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू चेंज होगी. देखिएगा कैसे. सो फर्स्ट बॉडी का मास हो जाएगा m1 मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, एंड इस मेटेलिक स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी. सेम मटेरियल है तो लेट डेंसिटी इज d, तो इसकी भी और इसकी भी. ओके, एक 3r है और एक 5r है. इसकी रेडियस इसकी 3r है, तो ये हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 5r
होल क्यूब, और इन दोनों की लेंथ क्या है 10r। देखिएगा अगर इनकी रेडियस देखें तो 3r और 5r 8r होगी, तो ये 10r ज्यादा है। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखें इसके अकॉर्डिंग तो इनके बीच में गैप भी होगा कुछ। अगर ये बोल दिया था 8r लेंथ पर है तो ये कैसे रखी होती इस तरीके से अटैच की, क्योंकि इनके सेंटर की लेंथ ये एग्जैक्ट 8r हो जाती। तो ये है, ये इनके बीच का लेंथ है। अब हम यहाँ पर फोर्स यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो वही फॉर्मूला यूज करिए, F इक्वल टू Gm1m2 by r square, so F इक्वल टू G into 4/3 pi into Q of this 27 r cube d into this is m1, this is m2, 4/3 pi into 125 r cube into d upon distance का स्क्वायर 100 r square. So according to this it will be G into 16/9 pi square into d square into 27 into 125 into r cube r power 6 upon 100 r square. So सभी वैल्यू अगर कांस्टेंट लेट कर लें तो f इक्वल टू दिस इज अ कांस्टेंट लाइक a into r पावर 4 एंड a इज कांस्टेंट और इस कांस्टेंट की वैल्यू ये पूरी है। सो f कैसे डिपेंड कर रहा है r पर, प्रोपोर्शनल r पावर 4, तो ये चेंज आएगा इस तरीके से। ओके, सो इन दिस वे अगर कोई भी मेटेलिक स्फीयर रेडियस के फॉर्म में गिवन की जा सकती है तो डायरेक्टली आप ये नहीं कह सकते कि फोर्स F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। ओके, हम उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर उसके जो भी r के फॉर्म में या जिसके फॉर्म में गिवन है, डायमीटर के फॉर्म में है, रेडियस के फॉर्म में, व्हाटएवर, सो उसको सॉल्व करके फिर हम निकालेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया F प्रोपोर्शनल कैपिटल R पावर 4। ओके, सो now let me discuss about the relation between capital G and small g. Relation between capital G and small g. So let mass of earth is me and radius of earth is re, a small body of mass m which revolves around the earth. Okay, so these are two masses m1 and m2. Okay, and length between them is re. So force, this is gravitational equals to G m1 m2 by r square. But according to second law of Newton's, okay, but according to Newton's second law of motion, this force is also equal to mg. So both will be balanced to each other. So according to this we can solve this by question first and second. mg equals to G MEM by RE square. So it is equals to G equals to G ME by RE square, or G ME equals to small g RE square, and this is ME equals to GRE square by capital G. Okay, so by the help of this mass we can solve the density of the earth. So now what will be the density? So density, we know that density D equals to mass upon volume. Okay, so according to this, mass ME is equals to GRE square upon capital G upon volume of this sphere is 4/3 pi r cube. Okay,
So density D equals to GRE square over capital G into 3 by 4 pi RE cube. So according to this 3G upon 4 pi capital G, this will be the density of the earth, 4 pi G into RE. Okay. In this way we will solve the density of the earth. Okay. In this way we will solve the relation between capital G and small g, and by the help of the mass of earth we will solve the density of the earth. Okay.